Okay, hello everyone. Today we are going to do the last topic. Yesterday we learned about workplace diversity and we studied about globalization and the issues that comes with the globalization and the issues that comes with the workforce diversity. Today we are going to study कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से मैनेज कर सकती हैं उसके लिए एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी का आपको जनरल मीनिंग तो पता ही होगा इट मीन्स लोकतंत्र दैट मीन्स गवर्नेंस थ्रू एंड बाय द पीपल मतलब जो लोग पावर में हैं दैट आर अमंग्स द पीपल जिनको उनको गवर्न करना दैट इज एज अ टीम वो बनेंगे सो दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स ओके ओके सो डेमोक्रेसी एट workplace democracy refers to adoption and application of democratic principles and practices in the working of the organization कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हो उनकी जो फिलॉसफी है काम करने की या उनके जो प्रिंसिपल्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन दी डेमोक्रेसी का एक ही प्रिंसिपल है कि टेक एवरीवन टुगेदर ओके हर किसी को हर एक इंडिविजुअल का से होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर और हर किसी को अपने साथ लेके चलना दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज अबाउट Traditionally, organization used to work in rigid formal organization structure with centralized authority as there was a clear division between skilled and non-skilled workers. पहले organizations जो थी वो बहुत ही फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर काम किया करती थी जिसमें सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज होती थी दैट मीन्स एट द टॉप मैनेजमेंट देयर यूज्ड टू बी फ्यू पीपल और वन पीपल हु यूज्ड टू मेक डिसीजन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो लोअर लेवल ऑफ लेबर्स थे उनको बस कम्युनिकेट किया जाता था कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके गोल्स हैं ये आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपको इन्हीं के विदिन काम करना है so that used to be the case in traditional organizations और अगर आज की डेट में भी आप देखो तो बड़ी सारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड सेटअप में यही होता है where there is a small organization and there is one person who will take all the decisions and rest of the people will follow that particular person. So was a very clear division between the top management and the lower level management. Sometimes we used to call them as blue collar workers and white collar workers as well. So this used to be the division and this is how organization used to work. बट आज की डेट में जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया है देयर आर पीपल who are well educated, they are professional by nature, they are experts in their field, and companies are hiring them and paying them well. These are the persons who are not running after the money, but they are the person who are actually high on their self-esteem needs. That means कि उनको recognition, respect चाहिए organization में rather than मॉनेटरी इंसेंटिव्स के सो वर्कफोर्स की भी नीड ऑफ मोटिवेशन चेंज हो गई है इसीलिए और ऑर्गेनाइजेशन में भी डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं सो द परफेक्ट मैच for the organization is to distribute the authority at all the levels to satisfy the egos and esteems of all the skilled workforce that are there. Okay, so skilled workforce in the traditional organization used to be the planner and the decision makers, whereas lower level of workers were executors. The role of unskilled workforce was to obey and fulfill the orders and decisions of the top management only. They had no other say in the organization. However, with lessening gap between the top and lower level management, employees have started opposing the yes boss policy, yes boss culture, ki whatever the boss is saying is actually right. They start to question today, they have started to question, they have started to refuse, they have started to say no to the bosses, right? So they have become empowered actually. So each and every employee in an organization wants to be heard and want to become a contributor towards the success of the organization. They expect from organization today to seek their opinions, make them a part of the planning process and respect the differences amongst them in the fair and transparent manner. Fairness and transparency is very important कि सबको पता है कि ये decision अगर लिया गया है तो किस grounds पे लिया गया है, what was the criteria to take such a decision, because
अगर आप सब लोगों को अकाउंट में नहीं लेते हो तो दे विल स्टार्ट टू अपोज बिकॉज दे आर एम्पावर्ड, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड देयर इज अ पावर ऑफ digitalization also, digital social media also. So everybody is demanding the democracy at workplace. With this comes the need to understand the concept of democracy at workplace, its role and its importance. Democracy is a system of governance. It is an ideology which states that everyone has equal say in the governance, irrespective of their caste, color, religion, as long as they are part of the system. That means आपकी organization में जितने भी employees हैं, ranging from top management to the lowest level of management, they all are part of one community. Although they may be different from each other, but that should not stop them from having a say in the organization. So democracy is a process of thinking. It is a thought process where a person considers that everyone has a say. अगर हम किसी के लिए decisions ले रहे हैं तो especially that person जिसको वो decision follow करना है, he should be agreeing on that particular decision. Putting this ideology in an organization is about giving each and every employee a say in the decision making of an organization, irrespective of their skill, nationality, gender, religion, etc. It refers to equity at workplace. I hope you are aware about the difference between equity and equality. Equity basically refers to that you are respecting the differences between the people, right? Equality का क्या मतलब है कि for example, if I am an engineer or I am a chartered accountant, let's say, and there's other person who is just coming as a graduate or who has just passed his 12th and is doing the internship. So अगर मेरी पे उस 12th पास के ही बराबर होगी तो in that case I will feel demotivated actually, because here the organization is following the principle of equality, but there should be equity. Equity का मतलब होता है respecting the differences in fair and transparent manner कि अगर if I am highly qualified than any other person in the organization, I should have a little bit more pay than the other person in the organization. So there is a difference between equity and equality. An organization should not follow the equality, but it should go for the equity in the at workplace. Now, so how a transparent working environment looks like, how a transparent working environment looks like. Okay, democratic work environment looks like. First is that there is transparency in that particular organization. A democratic organization works in a transparent manner. It keeps its decision, budgets, constraints, issues, challenges out in the open to in front of all the employees. There's nothing which is hidden from the employees. It provides regular update to the employees related to its plans. It shares the right information at the right time with the employees of the organization so that they don't feel cheated, they don't feel worried about their future and everything, right? So a transparent organization keeps in mind everything. Okay, then next is that there is a participatory work environment. Okay, a democratic organization gives everybody a chance to have a say in the management of the organization. A democratic organization believes in taking decisions after hours of discussions, negotiations, and brainstorming sessions. Right? Negotiation, brainstorming, it happens with everyone's participation. And when everyone feels free to express their opinions, that is where the participation happens. So it enhances the creativity and leads to wider range of solutions. Every employees get a chance to keep their opinions, queries, and grievances in the time of decision making. So what participation allows is that फर्स्ट ऑफ ऑल इट एनहांसेस द क्रिएटिविटी. अगर इतने सारे लोग अपने ब्रेन्स को अप्लाई करते हैं एक प्रॉब्लम के लिए, सो इट रिजल्ट्स इन न्यू आइडियाज. ओके, सो विच इन फैक्ट इज द वे टू क्रिएटिविटी बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ माइंड्स विच आर वर्किंग एट वन प्लेस and related and working on the solution to a particular problem. So you may come up with a very unique and innovative idea and broad range of solutions that you can follow up. Okay,
Then every employee get a chance to keep their opinions, queries and grievances at the time of decision making. जितने भी employees होते हैं उनको भी ये motivation मिलता है that they are being heard, they have right to keep their opinions, वो अपने questions भी पूछते हैं, and from a question you can result to a new solution or a new problem maybe. And they are also when they are free to talk to the top management, they also feel that they are ready to put their grievances in front of the top management. Next is flat organization structure. A democratic organization is non-hierarchical in nature. That means all the flat ka matlab kya hai, that all the employees are working at the same level in the organization. Tall structures hote hain where one after the another you create a position. That means there is a supervisor, there's a subordinate, there's supervisor, there's subordinate. But in flat organization structures, this is non-hierarchical in nature. That means all the employees are working as co-supervisors or co-colleagues of each other rather than working under each other. So हम आज की डेट में सबॉर्डिनेट या सुपरवाइजर कहने की बजाय हम कहते हैं वी आर टीम मेंबर्स, वी आर मेंबर ऑफ वन टीम, दिस इज प्रोडक्शन टीम, दिस इज द हेड ऑफ द प्रोडक्शन टीम. सो व्हेन यू यूज द वर्ड टीम, it means that all the people are together, they are not being differentiated upon, and they are given due authority to participate in the organization. Next is informal relation. Democracy is also recognized by the informal relations in the organization. An organization is able to conduct its operations smoothly when it works on the principle of mutual trust and cooperation. If trust is not there, आपने पढ़ा भी होगा मैनेजमेंट के अर्लियर चैप्टर्स में that there has to be a mental revolution. Top management has to trust their lower level of managers, and lower level management should trust the top management. So trust and cooperation जहाँ पे भी होता है, that organization works smoothly क्योंकि उसमें conflict के chances कम हो जाते हैं. And when you work in camaraderie to each other, there is a possibility of developing informal relationships with each other. मान लो अगर फॉर्मल फॉर्मेलिटी होगी तो कोई भी आपके एब्सेंस में आपका काम लेने के लिए तैयार नहीं होगा. बट व्हेन द एम्प्लॉय शेयर इनफॉर्मल रिलेशंस, देन दे अंडरस्टैंड दैट द अदर पर्सन माइट be in some problem or something like that, and rest of the people are ready to share burden for on behalf of that particular person. So these two factors get built in employees as and when they develop informal relations with each other. A democratic organization understands the basic human need to socialize and endeavor to develop a culture of share and care amongst its employees. That is sharing and caring. Share your feelings with the other employees. Once you know, see, what is important is empathy, not sympathy. Empathy means keeping yourself in the place of other person, okay, and think how that other person might be feeling. If you keep yourself in the shoes of the other person, then you are able to take the burden of the other person as well, and that is what is required. Sharing and caring culture is required nowadays in the organization. Okay, now next is freedom to employees. Democracy shows trust in the capabilities and sincerity of its employees, and give them freedom to design their own work schedules and targets. So these are the basic principles of democracy at workplace. So democracy also means आपने देखा भी होगा national में भी constitution में democracy is associated with a lot of rights to freedom, freedom to speech, freedom of being heard, freedom of freedom of speech expressions, and so on. So employees को भी बड़ी सारी freedom दी जाती है organization में, that but at the same time they have communicated their objectives and goals as well. But at the same time, जैसे आजकल आपने देखा होगा flexible timings का बड़ा option है कि आपको 8 hours पूरे करने हैं organization में, चाहे आप सुबह 8 बजे से स्टार्ट करें या 9 बजे से स्टार्ट करें या 11 बजे से स्टार्ट करें. यू हैव टू, क्योंकि एम्प्लॉयज में ट्रस्ट दिखाया जाता है कि विच एवर duration of the day they will pick up, that is up to them.
जिसमें उनकी efficiency maximum होगी, they can pick up that window and work on that. Then there is work from home for working ladies on maternity. They can, avail the benefit of work from home, right? Flexible timings, work from home, freelancing. Freelancers होते हैं आज की date में, they are not your permanent employees, but they take up they work on contractual basis. So आज की date में organizations have become very flexible in terms of ताकि और उसकी वजह से they are getting the greatest efficiency, okay, in their working. So freedom to employees of timing, of spending with the right amount of authority is what democracy is about. Now, what are the benefits of a democratic work environment? First of all, your employees will be very, very happy. Democracy means lesser, means a faster learning, faster, happier, and more innovative company. Okay, an employee feel mental peace in an environment where his options and suggestions are welcomed and taken into consideration. So, employees are naturally very happy, and if someone is happy to do the work, they every day they would like to go to that workplace again and again with a mental peace, and उनकी efficiency and productivity भी maximize होगी because they want to hold on to such workplace where they are given such freedoms. Okay, next is boost productivity. As I already said, that feeling of satisfaction and mental peace gives energy to the employees towards the growth of the company. A happy employee gives his 100% to the work rather than indulging himself into unproductive activities such as gossiping, politics, conflicts, and so on. Next, help in attracting and retaining the best talent. As you, if you have heard, you can Google also that Twitter and Google are the best companies to work for. If someone of you lives in Gurgaon also, if you go and look at the workplace of Google, there are people in pajamas also going to the workplace to do the work. So when you hear about such companies that you are very free, very democratic, आपकी teams हैं, they sit together, they eat together, and they work together. It's kind of a cafe setup. You when you hear about such things, then you get attracted towards such companies. You also want to work for such companies. So you develop your capability to such a level that you get selected in that particular company. So such kind of work environments attract more and more productive employees into the organization. So an organization has a very wide choice when it comes to good talent, and with the wider choice comes the best options also. So it helps in retaining and attracting the new talent into the organization. Next is that it builds a positive image. Agar, if I'm giving you example of Google and Twitter, that means they have something to I'm spreading the word about them, right? So that's because their image has been created, the case studies has been done on them. अगर आप Google करोगे तो आपको पता चलेगा कि Twitter का work culture पे पूरी case study की गई है, and that case study is all praises about their work culture. So it actually builds a positive image of an organization. So an organization which respects the rights of the employees, gives them freedom, and offer them enough prospects for their career growth and development, enjoys a positive public image, and hence directly adds to the brand image of the. Along with the democracy comes the sociocracy. Now, democracy में के जो disadvantages हैं, उसमें से एक तो ये है कि अगर आप डेमोक्रेसी में देखो तो आप देखोगे कि मेजॉरिटी रूल्स अप्लाई होता है, कि जो मेजॉरिटी कहेगी उसके तरफ जाएंगे. व्हाट अबाउट माइनॉरिटी? दैट इज द मेन थिंग अबाउट डेमोक्रेसी, कि माइनॉरिटी के राइट्स वायलेट करते हैं मेजॉरिटी पीपल. दैट मीन्स अगर मेजॉरिटी, द पीपल हु आर इन मेजॉरिटी, राइट, अगर उनकी पावर है rather than the people who are in minority. So अगर हम डेमोक्रेसी को ध्यान से देखें या ध्यान से उसके बारे में सोचें, then democracy is about making the people having
मेजर यस इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वो लोग जीत जाएंगे हमेशा, बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ चीज़ गलत कर रही हूँ, if that thing is wrong and one person disagrees to that, or 2 or 3 person or 10% disagrees to that, but I have got 100 people on my side, doesn't make me right. Okay, that 10 or 20 people could also be right. Okay, so democracy is about each and every one. It is not about majority. It is not about कि जहाँ पे भी ज्यादा पलड़ा भारी है उधर की तरफ झुकाव होना. ऐसा नहीं है. डेमोक्रेसी का जो रियल मीनिंग है कि सबको से होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो जैसे थॉमस जेफरसन ने बोला भी कि a democracy is nothing more than the mob rule. मतलब भीड़, हर्ड मेंटालिटी, जहाँ पे भीड़ है, भेड़ चाल, वो है डेमोक्रेसी. where 51% of the people may take away the right of the other 49% of the people. Matlab, because simply because they are in majority to the other people, right? The majority rule model of democracy is more and more coming into criticism with endless debates. क्यों? क्योंकि minority के rights को पूछने वाला कुछ नहीं है, and there are continuous questions that if 51% people are going in one direction, does that make that particular solution right? Okay, and will minority people never ever have a say in the working of the organization, or we can say nation? So the majority rule model, if we think of a model other than this for democracy, and for a perfect form of democracy, then the perfect democracy is what we call as sociocracy. Sociocracy और भी ज़्यादा advanced form of democracy है, जिसमें you need consent of each and everyone to implement that particular decision. Okay, now I am giving you a small example to understand the difference between democracy and sociocracy, right? Democracy के अंदर क्या होता है, आपने if you have seen Big Boss, तो वहाँ पे दो तरीके होते हैं जिससे उनको डिसीजन लेना होता है. आपसी सहमति एंड बहुमत. ओके, बहुमत का मतलब होता है कि मेजॉरिटी वोट्स जिस 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 भी डायरेक्शन में जाएंगे वो डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा. बहुमत, मेजॉरिटी रूल्स. आपसी सहमति का मतलब होता है कि जब तक सारे लोग एग्री नहीं कर जाते तब तक वो डिसीजन नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा. अगर एक भी पर्सन एग्री नहीं होता है तो it will be blocked. The decision will be blocked and it will not happen. Right? So sociocracy is आपसी सहमति and democracy is बहुमत. Okay? So sociocracy is perfect form of democracy which takes each and every individual into count. हर एक का वोट इम्पॉर्टेंट है, हर एक का वोट काउंट होगा. ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी का वोट काउंट हुआ और माइनॉरिटी का वोट काउंट हुआ ही नहीं. No decision can be taken unless each and every member of the groups agrees in the favor. Okay. In a system of sociocracy, even a single vote in against can stop the decision from implementation. अगर एक भी आदमी उसके ऊपर अपनी सहमति नहीं देता है तो that decision will be blocked there only. So where did sociocracy come from and how does it work? The word was coined by French philosopher Auguste Comte in early 1800s. The idea was to develop a working system until the 1940s when the Kees Boek, a Dutch educator and peace activist, used it as a means to govern his school in Netherlands with more than 400 pupils. So sociocracy is basically about taking each and every person into account into the organization. But sociocracy का जो सबसे बड़ा challenge है वो यही है that it leads to blockage, it leads to red tapeism. आप किसी भी चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते अगर आप सबको अकाउंट में लेके चलोगे. डेफिनेटली देयर विल बी, आप सबको एक एग्रीमेंट पे लाना दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, एंड सबको एक एग्रीमेंट पे लाना दैट इज नॉट
not always possible, right? So therefore you have to see कि how decision will be taken. आपको उस one person को convince करना पड़ेगा to take the decision, to take the decision in one favor. So sociocracy का ये है that there could be possibilities of blockage in the working. आप decision नहीं ले सकते हो because you cannot convince everyone on a single thing, right? So the matters gets blocked in that particular case. After sociocracy, next issue comes the challenge today that the management is facing is digitization. Okay, digitization का क्या मतलब है? Going digital, adopting technology as a means of production, distribution, feedback mechanism for everything. मतलब आपकी पूरी जो एक value chain है, value chain क्या होता है? The set of activities which adds the value, right? तो वो set of activities जो है वो करना किसके help से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से. ओके सबसे पहला स्टेप आता है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, जिसमें आपने देखा होगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरीके से मदद करती है. उसके बाद डिजिटलाइजेशन, नेक्स्ट स्टेप आता है वैल्यू चेन के अंदर प्रोडक्शन. आजकल प्रोडक्शन भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, राइट? देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इट कैन बी अ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑल्सो. सर्विसेज तो बहुत ही ज़्यादा डिजिटाइज हो गई हैं. आपने देखा है कि किस तरीके से आपको आजकल अगर डॉक्टर की कंसल्टेंसी चाहिए हो, डाइटिशियन की कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो यू कैन गो ऑनलाइन एंड जस्ट टेक इट. कोरोना ने, कोविड ने तो और भी ज़्यादा डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया है. देन कम्स द वैल्यू चेन के नेक्स्ट स्टेप में आता है डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेलिंग. आपने देखा होगा कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक इज फुल ऑफ एडवर्टीजमेंट. देयर आर न्यू ब्रांड्स every day which are being launched, and they are being launched on the internet. People were previously afraid of shopping from the internet or social media platforms, but today they are very very secure and active on in making the purchase. So marketing, distribution is also impact online. आपने देखा होगा कि कितनी सारी चीजें, अगर डिजिटल कोई चीज है, फिजिकल डिलीवरी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही होगी, देयर इज सम फिजिकल प्रोडक्ट. बट बड़ी सारी चीजें जैसे ई बुक, आपने खुद ही देखा होगा ई बुक्स आज की डेट में डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, राइट? उसके बाद आता है फीडबैक लेना, कस्टमर का फीडबैक लेना, उनकी व्हाट्सएप कम्युनिटीज बनाना, उनकी फेसबुक कम्युनिटीज बनाना. ऑल दैट इज बीइंग डन थ्रू डिजिटल प्रोसेस, थ्रू इन अ वर्चुअल वर्ल्ड. हम उसको वर्चुअल भी बोलते हैं. तो डिजिटाइजेशन इज बेसिकली utilizing the power of internet revolution in the manufacturing, production, distribution, and getting the feedback from the customer. Okay, so it has presented various opportunities. आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा that there could be companies like Uber, Ola, Paytm. They have all come into place, they have all come into existence because of the smartphone technology, because of the internet revolution. अगर 4G 5G नेटवर्क्स इस देश में काम नहीं कर रहे होते तो कितने सारे बिजनेसेस हैं जो कि आज लाखों करोड़ों मिलियनेयर्स हैं जो आज की डेट में वो नहीं कमा रहे होते. फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग ने जो डिस्कवर किया था व्हाट्सएप, तो everybody is using WhatsApp. It's been over like decades that WhatsApp is still the popular medium of instant chat box की तरह काम करता है. emails, कितना easy होता है that you can send message from one place to another place just by sitting, no matter how distant that particular person is. So what digitization has done is that it has brought all the people together. They are very well connected. So you cannot imagine your life in the absence of the digitalization, right? For organization as well, it has presented various opportunities. The one big platform that digitization has presented is e-commerce, that is exchange of goods and services through online retail websites. आज की डेट में कितने सारे entrepreneurs हैं, they don't have to think about the funding to give a physical shape to their business. If they are online distributing everything from their home, they are hiring the agents, they are getting the contract from with Zomato, Swiggy or Jabong or Myntra. They are getting into contract with them and they are selling their services as well as they are selling
आप देखो अर्बन क्लैप है, अर्बन क्लैप पे क्या हुआ है, जितने भी लोग हैं दे हैव रजिस्टर्ड themselves with urban clap and they are getting huge money which they don't used to get previously, right? So what they have done is that it has provided opportunity to the young budding entrepreneurs जिनको पहले funding के लिए brick and mortar मतलब एक फिजिकल बिजनेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, बट आज की डेट में they can start their online business. They have mere online existence. It is not necessary that they have to be on a physical, and they can connect with the people via online medium itself. So e-commerce, e-retail websites जैसे Jabong, Myntra, they have created along with the businesses, they have created convenience for the customer. किस तरीके से टाइम की बचत होती है, कॉस्ट की बचत होती है, घर बैठे आपको डिलीवरी मिल जाती है, ईज ऑफ रिटर्न, इजी रिटर्न भी हो जाता है, अगर कई बार तो लोग यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट को, देन दे सेंड इट बैक. So e-commerce has made it very, very easy for both the marketer as well as the customer to interact with each other. So market today is existing in the virtual world rather than, you know, और आपकी जितनी भी परचेज हिस्ट्री आपको पेपरलेस हो गई है वो पूरी की पूरी, क्योंकि आपको कोई बिल्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. एक ऐप है विच कीप्स ऑल योर रिकॉर्ड. अगर आप उससे लॉग आउट भी हो जाते हो विद द आईडी एंड पासवर्ड, अगर आप लॉग इन करते हो तो यू कैन ट्रैक योर एंटायर परचेज in over 5 years. और आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं. If you have any problem related to that, if you want to give them any proof, that is easily done through that mobile applications, right? Social media marketing, I already told you that मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा प्रोवाइड की गई हैं डिजिटलाइजेशन के थ्रू दैट यू कैन मार्केट योर सेल्फ वेरी वेरी इजीली. आप, और वो मार्केटिंग सस्ती भी है इन कंपैरिजन टू टेलीविजन के ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट देना. मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ वेरी चीप. 1 लाख में पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड द कंपनीज नेम इज अगेन एंड अगेन गेट रिफ्लेक्टेड इनटू ऑन इंस्टाग्राम पेजेस. और लोग क्लिक करते हैं उनके ऊपर, देखते हैं, फॉलोवर्स बढ़ाते हैं लोग. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज़ गिवन न्यू वेज ऑफ प्रमोशन टू द कंपनी. आज की डेट में पब्लिसिटी अगर आपको चाहिए, पॉजिटिव पब्लिसिटी चाहिए, तो इंटरनेट, सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग दैट, राइट? एंड ऑडियो वीडियोस कितने तरीके से एडवर्टीजमेंट बन रही है. दे आर GIFs ऑल्सो, ग्राफिकल इंटरफेसेस बन रहे हैं. तो न्यू वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट आर कमिंग अप for the companies, and that too at a cheaper rate, right? And then digitalization, what it has done is that it has opened the market for the marketer to a global level. आप इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. आप में से कितने लोग होंगे जो कि अब इंडिया में बैठे हैं एंड दे आर गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. कितनी सारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैं, दे हैव लॉन्च देयर ऑनलाइन कोर्सेज, और स्टूडेंट्स उनको घर, दे हैव रिकॉर्डेड देयर ऑनलाइन लेक्चर्स, दे हैव रिकॉर्डेड देयर ऑनलाइन लेक्चर्स एंड दे रीडिस्ट्रीब्यूटेड. तो नॉलेज क्रिएट हो रही है बार बार. आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करो एंड सेंड देम, राइट? तो वर्चुअल, अब कोरोना के टाइम पे तो दिस हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर दैट सब ने ऑनलाइन FDPs, ऑनलाइन वेबिनार्स, एवरीथिंग दे आर डूइंग. एंड this is what the power of digitization is today. But at the same time, there are various challenges also that digitization presents. The very first challenge that digitalization comes with itself is intellectual property rights. Now, what do we mean by intellectual property rights? These are the rights which are given to a person on account of creating something of intellect. ओके, समथिंग इंटेलेक्चुअल. आपने अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी से, अपने नॉलेज, अपने स्किल सेट से अगर कुछ क्रिएट किया है, तो दैट बिकम्स योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट्स, मतलब आपने कुछ म्यूजिक बनाया है, आपने कोई पेंटिंग बनाई है, आपने कोई बुक लिखी है, आपने किसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, आपने किसी प्रोसेस को इन्वेंट किया है, तो वो अगर आपकी इंटेलेक्चुअल से आई है तो दैट विल बी गिवन अ राइट. आपने सुना होगा, पेटेंट हो गए, ब्रांड नेम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, देयर आर copyrights also. So all of that is your intellectual property right.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो फिजिकल नहीं होते हैं, पेटेंट एक राइट है किसी के लिए। अब वो राइट जो है वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है डिजिटलाइजेशन की वजह से। आपने कितना देखा होगा, आप इंडिया में भी देखते हैं दैट आपको अगर कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करना हो, आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, आप सॉन्ग इजीली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी सॉर्ट ऑफ फी। आप किसी और के म्यूजिक को यूज कर रहे हो ऑन डेली बेसिस इन लिसनिंग, इन taking your own classes, dance classes maybe, but you are still not paying them the money, the royalty, राइट। पहले सीडीज खरीदी जाती थी, कैसेट्स खरीदी थी, बट आज की डेट में अगर आप देखो तो ऑनलाइन इंटरनेट पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। देयर आर मूवीज आल्सो अवेलेबल ऑन ऑनलाइन वेबसाइट्स। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैव कम इनटू अ थ्रेट कि जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसके इंटेलेक्ट की वजह से वो आई है, it can get easily leaked in the public domain without giving any benefit to the originator of that intellectual property, right? So intellectual property rights ko safe rakhna is a bigger challenge because they can be easily violated by anyone, right? नंबर टू, इंक्रीज्ड कंपटीशन। आज की डेट में कंपटीशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन। आप देखोगे, मैंने अभी आपको बताया कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर कमिंग अगेन एंड अगेन टू अब इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड एवरीबडी वांट्स टू कैप्चर द मार्केट। सो the digitalization is leading towards the increasing competition, right? And the last is disruptive technologies. That means कि technologies आजकल ऐसी आ गई हैं that they are making people's life easy, but at the very same time they are just destroying the old methods of doing the work. उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, हम ये कह सकते हैं। जैसे अगर लैपटॉप एक इनोवेशन की तरह आया तो इट ऑलमोस्ट डीवैल्यूड the computer, right? और अगर कंप्यूटर आए तो it devalued the earlier processes of doing the things. So there are technologies जैसे smartphones आए। अब Nokia was leading the Indian phone market with its phone buttons and button phone and smaller cheaper phones, but suddenly the smartphone technology came and all those phones got disrupted. मतलब वो आज की डेट में कोई यूज भी नहीं करता है। ओके, इट इज लाइक जैसे डिमोनेटाइजेशन में पुराने नोट्स की कोई वैल्यू नहीं बची, सिमिलरली टेक्नोलॉजी इज अ काइंड ऑफ अ डीवैल्यूएशन की जो आपकी पिछली एक्टिविटीज है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो देयर मे बी दे, तो उन इनोवेशन में भी कॉस्ट गई हुई है, उन इनोवेशन को डिजाइन करने में, डेवलप करने में भी कॉस्ट गई हुई है। एंड द चेंजिंग टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन keeps on devaluing the earlier innovation. So that is disruptive technology. वो सारा का सारा जंक हो जाता है, वो सारा का सारा devalue हो जाता है। It is nothing but waste that is getting collected. So this is what digitalization is doing, that the pace of innovation, the pace of changing technology is so fast that it leads to losses also. It is very, very costly for the marketers. Next challenge is innovation. Innovation is a great challenge for the management because it comes with huge cost. A company has to invest in the market research and development for creative ideas and innovation. It has to regularly keep a tab on the market. If you miss on the innovation, then that is the आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो इनोवेशन के ऊपर, एंड हेंस you have to continuously invest yourself in the innovation process. Next is resistance to change. Innovation means changing. Continuous change has to be adopted in the organization. Okay, but there are employees who are not always ready to adopt to the change. So therefore, that kind of innovation requires no conflict in the organization, continuous commitment and motivation of the employees. Now, how you have to keep the employees on their toes, that is the challenge. आपको बड़े सारे motivators provide करने पड़ते हैं so as to ensure their commitment towards the innovation.
right? And the next thing is that अगर आपको एक innovative culture चाहिए, your structure have to be equally supportive. आपका structure इस तरीके का होना चाहिए that it should support the innovation, that is democratic participatory work environment होना चाहिए, and which can lead to innovation. So creating all of that, that is showing commitment, showing motivation, avoiding conflicts, bearing the cost of research and analysis, designing organizational structures in such a way that it leads to innovation, and it requires huge efforts on part of the organization, which may not always give you return. It may or may not give you the return also. So that is what entrepreneurship and innovation, that is how entrepreneurship and innovation is about. Next is values and ethics. Values and ethics is another challenge for the businesses today. It is basically the code of conduct that an organization should follow. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे बेसिस पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के सामने बड़े सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ऑन डे टू डे बेसिस. फॉर एग्जाम्पल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ठीक है? तो आपको कंपटीशन को किस तरीके से फाइट करना है. समटाइम्स इट लीड्स टू अनहेल्दी कंपटीशन दैट बिजनेस फॉरगेट्स देयर एथिक्स इन बिटवीन. तो दैट जैसे अगर कार्टलाइजेशन कर रहे हो तो बिजनेस फॉरगेट्स दैट कस्टमर का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो रहा है उस केस में. बिजनेस हाउसेस जो कि जिनकी डीपर पॉकेट्स होती हैं वो स्मॉलर मार्केटर्स को हटा देते हैं एरिया में से, उनको कॉम्पनसेशन पे करते हैं, एंड दे रूल दैट पर्टिकुलर एरिया विद देयर बिजनेस, मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं. Then they also exploit the natural resources of the organization, of the natural resources of the society, so without being accountable to them. So that is where the values and ethics question comes into place. तो एथिकल इश्यूज क्या हैं कि हर एक बिजनेस को अपनी डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज के कॉस्ट पे नहीं करनी चाहिए. इट शुड यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. देन सेकेंडली स्टेक होल्डर्स परस्पेक्टिव. आप बिजनेस का एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना पहले ट्रेडिशनली, बट नाउ अ डेज एथिक्स ने, वैल्यूज एंड एथिक्स इन बिजनेस टॉक्स अबाउट कि बिजनेस का कंसर्न सिर्फ उसके शेयर होल्डर्स नहीं है, इट इज एवरी वन. शेयर होल्डर्स के साथ साथ देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु हैव इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. दोज आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स, जैसे कि सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, गवर्नमेंट. तो सबके इंटरेस्ट को साथ में लेके चलना बिजनेस की जिम्मेदारी है. इवन कस्टमर को भी बिजनेस को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए कि उनकी पॉकेट्स डीप है तो उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, राइट? Then philanthropy towards poor and underprivileged people is also the ethical issue कि एक business को sense होना चाहिए that if they are earning money then they should contribute something towards the development of the underprivileged people and poor or developing underdeveloped nations as well. Then it should have a transparency in the working of the organization. At the same time, it should have accountability towards the society as well. कि अगर इसने कोई भी act किए हैं which has resulted in some damage to the society. For example, अगर मैंने कहीं पे industry setup की है and that industry is leading towards the pollution. So what I am doing is eco-terrorism. That means I'm killing the people of that particular area through my waste disposal. So I should be accountable to that. I should be taking the responsibility of maintaining the health of the people of that particular society by providing them clean water and a healthy and air to live in. So एक business को इन सब ethics का ध्यान रखना चाहिए, that it should be accountable and it should feel responsible towards the society for its deeds. Okay, आपने भोपाल के tragedy के बारे में तो पता ही होगा that it killed a lot of people. It is one of the cases of lack of business ethics जहाँ पे business was working by compromising upon the rights of the other people. So that is why ethical issues have gained great importance nowadays because of the various questionable acts of the business. So business ethics tells you that आप
अपना business करो, you look into the profitability, but without compromising upon the need of the society, other stakeholders, without compromising upon the environment and resources of the nations. And as a good conduct, you should also look towards the poor and underprivileged people of the society. So a holistic approach to management. पहले मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती थी कि आपको शॉर्ट टर्म होना, कि हम शॉर्ट टर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए जितना प्रॉफिट कमा सकते हो कमाओ, ठीक है। तो उससे क्या होता था, बिजनेस बहुत ही शॉर्ट टर्म होता था, उसको सोसाइटी को भी नुकसान होता था, कस्टमर को भी नुकसान, और बिजनेस भी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिस्ट नहीं करते। सो आज की डेट में मैनेजमेंट की अप्रोच कैसे होनी चाहिए, एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि इसको लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना चाहिए रादर देन शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के बारे में। देन इट शुड टेक इन टू अकाउंट द क्रिटिकल एक्सटर्नैलिटीज, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, या कॉस्ट ऑफ प्रमोशन नहीं है, बल्कि इसको सारी उन सोशल कॉस्ट का भी हिसाब देना चाहिए जो कि इसकी एक्टिविटीज की वजह से सोसाइटी को फेस करनी पड़ रही है। इफ इट इज वायलेटिंग द एनिमल राइट्स, तो इसको एनिमल्स के, अगर ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो इसको प्लांट करना चाहिए ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें एक और कॉलम होना चाहिए एनवायरमेंटल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट का। दैट इज़ व्हाट होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेजमेंट इज अबाउट। Last is, it should give adequate attention to the things that leads to creative economy, मतलब innovation की तरफ। It should think of new ways of doing things. Innovation is about making yourself more efficient, कि कम से कम resources में ज़्यादा से ज़्यादा benefit आप कैसे निकाल सकते हो, वो management का approach होना चाहिए। So organization will need to create holistic measurement system that captures the many interrelated variables that drives the success of the organization. So this is about management, its challenges, and this was the last unit of management. And okay, so this is it for today. Chalo, theek hai. I'm ending.